Hello, good afternoon, everyone. I hope everybody is fine. Everything is okay. So we are going to just start today our session on non-conformance management and Kaizen. So are you as of now following Kaizen and non-conformance management in your company? And just for a feedback for myself, and is it broadly a part of internal improvisations or customer driven, where customer is pushing you to showcase the document and the process and how you are recording it, or it's internally driven where your डिपार्टमेंट से ही लोग आके सजेशन करते हैं कि ये करना है, या एक डिपार्टमेंट क्वालिटी डिपार्टमेंट बोलता है कि ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ है तो इसका नॉन कन्फर्मेंस रेज करना चाहिए और कैसे इम्प्रोवाइज करना चाहिए. How it exactly works at your level, if anyone can just give some of the example in your company. Can anyone share something? Okay, so anyone would like to give some inputs on this, or should I continue in this case if there is no input? So I will just start on this basis. Okay, so we are just starting now with the first of all with the Kaizen, and then I will showcase you some of the case study and the non-conformance in Kaizen, what way it can be recorded. So Kaizen and non-conformance, these are both of them can be external, internal, process related, cost saving aspects, time saving, many possibilities are there. And basically, it's improvise overall, your quality of the parts, uh, time or process improvisation, and so on and so forth. So first, we just see through the Kaizen, what type of Kaizen data may be recorded and what way it can be analyzed. So Kaizen, first of all, is mainly where you are dealing with problem identification. So what type of observation you have made, what type of problem statement you have, in which workstation or area this problem has been identified, maybe material grade or casting type, and a problem description. So basically, you may explain like we have find blow holes and mismatch and delay in delivery because of this, and this process is taking so much time, and etc. So you can identify problem statement, and of course the issue it's related to the quality or productivity or safety, cost, delivery, where exactly it has major impact, I would say broadly. So these are the first thing that you should know. I mean, this is just a basic question why you would like to do Kaizen. So that should why come from all this aspect that because there was some observation, because there was a problem statement, because there is some issue with respect to quality or productivity, safety, etc. So that is problem statement of Kaizen. Then the second part will be after that, who identify the problem. So of course you will be able to identify key, okay, X person in this department has identified this problem in this date or shift or something like this. So basically, occurrence, so to say, or observation of the date from which you have find out there is something wrong with this. Then
you go to the base, like what are the ways it can be improvised. So generally we in Kaizen mention like before and after data. That is where you will be able to justify maybe sometime cost occur to it, resources required, change in process, customer, you need to convince them for certain changes. So these aspects are based on maybe a cycle time or actual time taken, scrap rate or rework rate percentage has changed. So you have to justify like before and after what has changed. Number of defects per 100% casting or 100 casting, downtime, cost of poor quality, material or process parameters, mainly technical parameters like pouring temperature was high. That leads to something, something, something. So because of that, we have identified the way how to ensure that pouring temperature will not go beyond this from the next time. What are the ways to improvise that? So these are basically leading you to the point of which way and where are the process data you have which you may want to improvise. Then suggestions. So now we have understood there is a problem statement, there are observations, there are as of now statistics or data which indicates that we need improvisation. And this improvisation means that now somebody from your team will come up with the ideas that how to solve this problem, because now we have a problem statement, now we have a data like okay, it gives us rework or blowholes or taking so much of time, productivity, quality, safety, what we have seen. These are the aspects where it has impact. So how to solve this? It's a process where you are discussing internally to find out the way that how this can be solved. So description of the improvement idea. Okay, give us a suggestions how you want to improvise this. Expected benefits. So qualitative as well as quantitative ways to find out the benefits of these suggestions. Implementation methods. What are the resources required? Is it just manpower? Is it just a SOP change, or it additionally requires changes in the tools or process or additional cost to resolve this problem, let's say. Then estimated ROI, payback time, or how what it is going to impact after implementation of this, what way it is going to impact in terms of ROI or payback and improvisations. So the post Kaizen data is important, that now you are recording that, okay, the idea we had received, we have implemented. Now, date of implementation, new cycle time or rejection rate, what has changed because of this? Or sometimes even it increase. If our idea was not that good, it may lead to some more problem. Then new cycle time or rejection rate, reduction in defects, downtime, actual cost saving, operator feedback, and evidence, mainly photos and videos after that. So this is a technically what different ways you are documenting, and then a traceability that you also trace that this was a short-term improvisation or a long-term. Whether this Kaizen is just solving a immediate problem in hand or long-term focus you have for this particular problem statement. And then you have its different attachments. You can keep it for before after images, approval status, review dates, how much time it take, to review, who is the authority person involved, how much cost occur, how much cost saved after this, and so on and so forth. So this all is data. I mean, Kaizen without data is doesn't make any sense. So particularly, again, I'm repeating, and I would also request in between, our today's speaker, Manish Bhai as well, he will also join us for this set, is that Kaizen and non-conformance are the two topics where if you are not doing this with your pure intent, with your, with your basics inside, that yes, we are doing this for ourselves. If you are doing any Kaizen or non-conformance just from the point of your क्या हम बोलते हैं लिखापोती, जस्ट टिक मार्क करने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए, कस्टमर को हैप्पी रखने के लिए, ऑडिटर को हैप्पी रखने के लिए, इवन मैनेजमेंट को हैप्पी रखने के लिए, then do not waste your time for data collection and reporting. सो काइजन और नॉन कन्फॉर्मेंस मैनेजमेंट का डेटा कलेक्शन और इसका डिजिटलाइजेशन और इसका डैशबोर्ड एनालिटिक्स तभी टाइम और मनी स्पेंड करना चाहिए
जब आप एक्चुअली इंटरनली ड्रिवन वो कर रहे हैं, ना कि सिर्फ टास्क है और टारगेट है इसलिए कंप्लीट करना है, तो नहीं करना चाहिए. इट विल नॉट गिव यू एनी इफेक्टिवनेस, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन मेनी कंपनीज इट मे हैपन कि जब वो करने के लिए करना है, मैनेजमेंट बोलते हैं कुछ करो, आप कुछ इम्प्रोवाइजेशन नहीं करते इसलिए कर रहे हैं. कस्टमर आके बोलता है ये इम्प्रोवाइज नहीं किया आपने तो कुछ करो इसलिए किया. कस्टमर बोलता है आपका काइजन डेटा का इसलिए कर रहे हैं. अगर वो सारी चीजें हैं तो उसके ऊपर एफर्ट्स डिजिटलाइजेशन और एनालिटिक्स पे कम डालना चाहिए. आप जो प्रोसेस से कर रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए है, वो डॉक्यूमेंट फिलअप करने के लिए, सो दैट यू कैन कंटिन्यू विद दैट सेम फॉर्म until unless that has changed drastically. So what could be a Kaizen example? Okay, let's say there is a problem statement. We have a core shifting, and then there is a casting mismatch. Then before defect rate about 6%, cause loose core prints, then action taken, new locator pins added or down pins added. Then this has came down to 1%, and savings is approximately 15% per month. So here again there are more data like who has suggested, who has find out the identified it, who has solved it, how much time it take, and so on and so forth, or how much time it cost it take to solve this and so on and so forth. So there are many ways. So I will show you one example of format which you may use. I will also share this Excel file it will try. So this is a format maybe you can follow initially on paper or Excel, and then maybe I will show you the its digitalized way. So basically you have Kaizen ID. It's number of Kaizen you implemented in a year or financial year or something like this. This is a date where you have identified or recorded the Kaizen. Then you have a department or area in which you have this Kaizen belongs to. Then a process step. Then the person or employer name who has identified this Kaizen or reported this problem. Shift problem description. So here the problem description is a very, very important point. It should be clear what exactly is the problem, right? It should not be uh, generic in the sense that nobody knows what exactly solution needs to work upon. So the problem statement is a very important aspect where your clarity is required. Then what type of defect it leads to, what type of problem it leads to, particularly with this issue. What is the rate of defect, or in case if it's related to the cycle time, then what is the current cycle time to do this task? What leads to the scrap or rework or rejection because of these issues? What is the percentage rate or something? Now, after this, it's come to the observation that, okay, if this is happening, what are our observations for that? Okay, the sand moisture was 3.5% or pouring temperature was 1340 degrees, something like this. You must have some observation. Then now comes the suggestions, how to improve this. Okay, so improvement idea is like, so here if you see particularly for this problem, uh, there are suggestions given like excessive pouring temperature, then there is the addition loose core prints were find out, so installed oil paints or redesign the core box or reduce moisture content, many, I mean depends on the problem there, of course suggestions are different. So I'm not going into the technicality why it is written or what is the reason for this. That is not the point we are going now. Then what are the resources required? So it says vent road tools or nude oil pin is required and something like this, or even moisture analyzer is required to ensure that every time we check the sign moisture or something like this. Now then is estimated cost to implement this, estimated saving. Maybe you can define one time or I don't know per month or per year, depends how you want to mention it. And then who has approved it, when it was implemented, what was the person responsible to take this Kaizen, what is the new cycle time. You should always compare the new before and after. We will show you into the printout later on. Then the new defect rate, actual savings. If there is any supporting document or attachment, you can do that. Is it a sustainable after 30 days or a short term? So maybe you can define whether it's a long term Kaizen or short term Kaizen, so you can justify the cost and efforts and so on and so forth. And then maybe comments like effective, repeatable improvements, good result, or maybe you can say how many of them are open or closed or still under progress and so on and so forth. So maybe you can give different ways to justify the Kaizens. So this is a Kaizen just overall format. What you can do it on paper or Excel or something like this. Now,
alternative to this may be a digitalized format where you can think of Kaizen is not just put on paper, but every time when we do this, we want team to be notified and we want the dashboards and it's or any historical data as well because sometimes Kaizen non-conformance tool management or tool change, these are the areas where it may happen that one idea which you already implemented before 3 4 6 months down line, again and again the same has been tried, maybe because suggestion was given by someone. You don't remember that in the past you already done this, it is not work or it has worked or something like this. So that's why the data is very important. Just to give you a broad idea, let's say this is the estimated cost to do some Kaizen. If I just go here, right? So let's say this is just approximately this cost coming around 50,000. Now, if let's say out of this 50,000, if 10,000 is such a cost which you already tried in the past, which you don't remember now, right? I mean, not possible as a human to remember every small core went change or dowel pin added or not. It's not feasible or practical for us. But if you see, if you have a history of such Kaizens part-wise, customer-wise, department-wise, it is very much feasible that this kind of history can be seen, and accordingly that you can decide whether it is meaningful to try this or not. So this is even without doing any Kaizen, you can upfront save 10,000 bucks because you know it was done, it was not successful. So it's not always putting efforts. Sometimes your data also saves your time and effort. Okay. So this is just logic behind why its digitalization is important, just to justify that point. Now, here in this format, we can enter the data. Okay, so you can enter data like, okay, I'm talking about this plant. This is a month for April, today's date, then finish date. I would say we set a target to finish it by May 14th. Then person is Bhushan, maybe department. Then you can say designation. Then your area of improvisation, problem statement, countermeasure, root cause, data before and after images you can upload and so on and so forth. So just to save time, I'm not going through that. I will just showcase you one example here. I'll just fill this data to showcase you. So this is the way you can see. I have filled the data. Okay, this is my problem statement. So it says, the with current surface plate size of 2 by 1 meter only, one part dimension can be checked, which takes approximately 25 minutes. Okay, that's the problem statement. Now, what is the root cause and the intention is that reduce the dimension inspection time. That's the purpose why we are doing this. So the root causes, there is a limitation on the surface plate size. Okay, then what is the countermeasure? So team has come up with the idea that if we increase the surface plate by of 3 by 2 size, then at a time, two parts can be inspected and the time of dimension inspection will be reduced by 50%. So just by surface plate size was a constraint. Additionally, if we increase the surface time, it is helping to reduce the at a time two parts can be dimensionally inspected, and it also saves almost time of 50%, let's say. So this is a way by quality and what are the impact like productivity can be increased and so on and so forth. So you can specify what is the resources required. You need to purchase a new surface place 3 by 2 meter and then calculate the time of how much inspection can be improvised or faster and multiply this savings of time by labor cost per day, per hour, per shift, and that comes to the monthly saving. So it says about 80,000 of can be saved. And then after that implementation is complete, the colleague who has completed it will fill the data. Once they get the email notification, the Kaizen is changed after before, data will be uploaded and it's signed, digitally signed data is available. Now, if all this happens, and even we have a complete setup in the email where the data, when it goes to when it is booked, you can send a notification to the concerned person. So here,
by just entering the email details, every Kaizen will be booked. And once you assign the concerned person and department, the automatic email will be go to him like what is the Kaizen problem statement, the challenges, and so on and so forth. And this is can be also sent into the form of a into the form of you can see the graphical as well. So if you see this way, so it says Kaizen, you can browse department wise, designation wise, or within months, how many Kaizens were booked and so on and so forth. So this Kaizen, particularly I've selected right now, I'm talking about this Kaizen, and it shows that, okay, it can save about 80,000 Kaizens, and 80,000 per month. This dimension inspection time reduction required, it's a requirement, the problem statement, root cause, countermeasures. Then we have a before and after different surface plate that has been changed. And then the observation that, okay, this dimension productivity is increased by 45%. So customer was expecting a faster time post pouring to process for the stages. So this time have saved time. So our delivery has become faster. Customer is satisfied and so on and so forth. So this is a way you can see the improvisation and history of your data, and then you can utilize digitalization form of that, as I said, if you are able to record this with some meaningful. But if you are again repeating, if the Kaizen is just for to make happy customer, auditor, or management, no need to put efforts for this kind of things. Okay. Now, the second part is, let's say if you are doing some Kaizen tracking. So it means I want to track, okay, a little bit other with purpose that in which month, how many Kaizen team, who has done, which department has done, and so on and so forth, and its status. Instead of filling up all this data, what we have seen, if somebody is going one down level, just measuring how many Kaizen came, what was effective or not, and so on and so forth, just simple. Then one level down, it can be done like this as well. And if you do this, it gives you the Kaizen tracking department and plant wise. So in which month, how many were completed, off track, on track, how many belongs to which department, which plant it is, what was the person that has given the task, and so on and so forth. So this is a way you can technically review Kaizens as well, because your workforce is not there just to work for 9 to 5, it is their responsibility to also apply their minds and the presence to solve various problem statement you have in your company. And this reflects again the management, the department, the individuals, how they are collaborating with different departments, within departments in a foundry, because this is not possible if it is not a good team. So if you don't find much kaizens and improvisation in your company, one of the major reason could be the team collaboration, and intent that may be missing. So you can think of this way for the kaizen. So I would suggest that despite digitalization, if you do or not, broadly you should put this kind of chart board or a notice board where all your department-wise notice board, not combined, right? I mean, of course, in the reception, maybe you can put a combined, but you should still use this board, because that board, every time you pass next to it in a foundry, will remind you that okay, something is pending from my side on this Kaizen. Something is thing I have to do. So this is a very powerful hammering tool. Notice board is one kind of hammer. Every time you will bypass this, it will give you a thought that okay, I remember I have something to do. So I will still recommend every foundry to use notice board for Kaizen, for non-conformance, for rejections, for productivity, for plant utilization, department team utilization. This is a powerful tool. Visualization passing through it will always give you hammer. So this is a good thing to, if you are not doing this, you should implement. Doesn't matter how good or how small or big foundry it is, but still they should try this. And this is just an example that I was giving for Kaizen before, after, and tracking of how many Kaizens open, off, on track, and so on and so forth. So this is what I wanted to convey for the Kaizen side. So if you have any other points for the Kaizen, maybe you can just unmute yourself, and I will also request Manish Bhai to come in and give some aspects on this Kaizen side, please.
Thank you, Bhushan bhai. Sorry for joining in late. No issue. Most welcome. I was in an evaluation session for a student project Okay, great. today. But I think Baki, if we have some questions, it is better because Kaizen is something which is relevant to everybody, including us. Everybody is. तो आप में से कोई इसमें you have any question? Yeah, are you doing Kaizen in your foundry or industry? And what are the challenges you face in Kaizen? If somebody can share. So I talk of हमारे इंडस्ट्री में Kaizen is हम लोग बात तो बहुत करते हैं, but we are still not be able to build a dashboard for Kaizen in the way as you have presented so well. But I think Kaizen is a methodology toolbox as one of the possibilities जो Japanese ने evolve किया है. But उसका fundamental lies in our own how do we record information. And I think digitization and recording information go hand in hand. So पहले recording information was manual in logbooks, then in Excel, and then now we are moving to real-time virtual visualization and so many tools. But fundamental foundation for any Kaizen is am I using am I recording information? Number one. Second, am I using data uh, as a tool for improvement or decision making and improvement? And this comes from our own experience of when we were not doing this, what was the impact? And when we started doing this, what was the impact? It has an immense impact. And so we started, even today, I was in Belgaum for Dharwad for a couple of days. And when I was discussing with a few customers about how the plants are working, so I started to see there are so many opportunities for improvement. But what was missing was जो भी observation है, nobody is written it. They will tell me हमने उसको फोन कर दिया and information खत्म हो गया. Now the data analysis or digitization cannot start if you are not writing things. मतलब आपके हेड में है तभी ऐसा एआई टूल नहीं है कि मेरे दिमाग में चल रहा है वो निकाल के दे देगा. So till that comes हमको and that's why this digitization becomes so important. So what I have been discussing and telling them, anything you find, please write, number one. Second is many times people find a problem, they solve it also, but that is also not documented. So next time when the problem comes or the other person has, the same person is not there, then you don't have a database. Now that means I'm going to lose time. Now, if this was also recorded, because of lack of data, I'm losing time. That is also Kaizen. ये realization ही हम industry में नहीं लेते. That not having data is also one of the biggest drawbacks an industry has to be able to compete, to be competitive, to improve. So Kaizen ka fundamentally, and there's a very specific behavior which we always talk about, which is keeps records for evidence and decision making is one of the very important behaviors which has been identified during research by the UN program, which is the foundation for Kaizen. और वो कंप्लेन होगा तो आप फिर उसके ऊपर रिसर्च करना चालू करेंगे. You'll do root cause analysis, you'll do why analysis, but the fundamental first step is to record the data. So I think whatever platform you are showing, whatever I saw, is उसका foundation
डेटा रिकॉर्ड एंड आई थिंक ऑल दिस सेशंस हम लोग जो ले रहे हैं उसमें एक फंडामेंटल मैसेज आई थिंक शरद जी भी हर बार बोलते हैं कि डेटा रखो, डेटा के बिना काम नहीं होगा, और काइजन भी उसी का आउटकम। यस भूषण, वी कैन प्रोसीड। Yes. So thank you, Manish Bhai, for your input. Any other questions from anyone? Otherwise, we'll proceed for a next non-conformance. I will just share my screen. So the next thing is that the non-conformance. So non-conformance basically क्या है कि कहीं ना कहीं compliance part है जहाँ पे हमको because of some process part reject हो गया, customer से complaint आया. So it's kind of one time of complaint management where you are recording the issue or complaint. उसके बाद उसको क्यों हुआ, why. अगर आप देखा जाए तो सभी का जितने भी मेथड्स है, चाहे आप नॉन कन्फर्मेंस की बात करो, काइजन की बात करो, 5S की बात करें, कहीं पे भी जाए, बात सब कुछ एक ही जगह पे है. ऑब्जर्वेशन, देन क्वेश्चन व्हाई, क्यों हुआ, उसको कैसे इम्प्रोवाइज करना है, कैसे सही ठीक करना है, वो ठीक किया, वो आइडिया इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, और हुआ तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है या क्या है, और उसको फिर क्लोज करना है कि ये जो प्रॉब्लम था वो स्टेटमेंट क्लोज हो गया है, अभी हमने इसको या तो रिजोल्व कर लिया, रिजोल्व नहीं हो सकता या वट एवर. बट आप देखने जाओ मोटा मोटा तो सभी मैथोलॉजी, जापानीज लो, जर्मन लो, यूएस लो, कहीं पे भी चले जाओ, द प्रोसेस इज सेम. कि आपको अगर आप ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो इन सभी चीज का पर्पस ये था, जब इंडस्ट्री या जो हम बोल रहे हैं 4.0, 3.0, 2.0 जो भी था, वो स्टेज जब नहीं थे या उतने, अगर हम पीछे चले जाए, तो ये सारी चीजें करवाने का और करने का इंडिया में आज भी रिलेवेंस है. क्योंकि हमारी इंडस्ट्री आज भी इंडस्ट्री 4.0, आईओटी ये सब बोलने के बावजूद ह्यूमन बेस्ड है. मेजरली सारी इंडस्ट्री है, ठीक है. सर्टेन ऑटोमोटिव असेंबली वो सब एरिया छोड़ दे तो अभी भी ह्यूमन ड्रिवन है. तो ये प्रोसेस जो था वो इसलिए था कि अगर कोई भी नया पर्सन कंपनी में आता है तो ये मेथोडोलॉजी से उनको एक ट्रेनिंग दिया जाने का पर्पस है और एक हैबिट फॉर्मेशन का पर्पस है कि आप हमेशा क्वेश्चन करो. रिजेक्ट हुआ, क्यों हुआ, कस्टमर ने कंप्लेन किया, क्यों किया, कस्टमर को मटेरियल नहीं पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा, प्रोडक्टिविटी कम हुआ, क्यों हुआ, राइट. तो ये क्यों जो है ना, वाई, वो सभी चीज का बेस है. स्टार्ट कोई भी चीज अगर वाई, और होता क्या है कि हम जब अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जो अपने तरीके हैं प्रोडक्शंस के, उसमें कस्टमर जो है या उसके डिलीवरीज जो है या फिर समटाइम्स मैनेजमेंट की जो प्रायोरिटी है, वो इतने सारी जगह अभी वो क्या बोलते हैं टिक मार्क वाला काम हो गया है कि हम वो वाई पूछना छोड़ दिए. हो रहा है ना, डेटा दे दिया, सबमिट कर दिया, प्रेजेंटेशन बना लिया, पीपीटी बना लिया, वाई में नहीं पढ़ना है. था, काम कर दिया, खत्म कर दिया, उसका पॉइंट लिख दिया, उसका ये काम दिखा दिया, इस महीने का डेटा बना दिया, इस महीने का पीपीटी बना दिया, इस महीने का प्रेजेंटेशन दिखा दिया, इस महीने का एक्सेल कर लिया. उसमें अंदर जो देखने के बाद जो वाई थे, कि वो डेटा देखने के बाद वाई पूछने का पर्पस था, वो साइड में रह गया. सिर्फ वो बना दिया है, प्रेजेंटेशन दिखा दिया, कस्टमर को दिखा दिया या ऑडिटर को दिखा दिया, मैनेजमेंट को दिखा दिया, वो करने के चक्कर में वाई साइड में छूट गया. तो मैं इसलिए सिर्फ एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि अगर आप ये सारी चीजें, वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर अपने ऑडिटर मैनेजमेंट को सिर्फ हैप्पी रखने के लिए, कस्टमर को खुश रखने के लिए कर रहे हो, तो ये कुछ भी डिटेल्स में नहीं जाना. एक फॉर्मेट बना लो, उसके अंदर भी आप मैक्रोस वगैरह फॉर्मेट करके ऑटोमेटिक नई काइजन बना सकते हैं. फेक काइजन, हर महीने की 5 फेक काइजन बनाओ, फेक काइजन सॉल्व हो गए, इतना सही हो गया, कर सकते हैं. नहीं कर सकते ऐसा नहीं है ना, वो भी कर सकते हैं. मैं ये क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं कि अगर आप कोई काम उसके आउटपुट के लिए नहीं कर रहे हैं तो उसको भी सिंप्लीफाई करो, वो फेक को भी सिंप्लीफाई करो, उसके पीछे टाइम मत दो. बट अगर आप सही में इंटेंशन से कर रहे हो तो उसके पीछे टाइम देके उसके रूट कॉज में जाना है. ये दोनों पर्पस है. तो अगर फेक भी करना है तो दिमाग लगा सिस्टमेटिक लो कि फेक करने के या वो डेटा जनरेट के लिए मेरा टाइम नहीं जाए, क्योंकि वो अल्टीमेटली गलती है, बट करना है इसलिए कर रहा है. और अगर सही कर रहे हैं तो उसकी पूरी
इसके पूरे प्रोसेस और मेथोडोलॉजी फॉलो करके करें। ओके, सो बेसिकली नॉन कन्फॉर्मेंस अगर आप करते हैं, सो यू शुड हैव फर्स्ट ऑफ ऑल कि नॉन कन्फॉर्मेंस आईडी जनरेट करो, कितनी एनसी जनरेट हुई, उसका रेफरेंस नंबर एक होना चाहिए, लाइक ईयर वाइज, मंथ वाइज, वॉट आप सर्टेन फॉर्मेट्स में कर सकते हैं। कब डिटेक्ट हुआ, डेट एंड टाइम ऑफ डिटेक्शन, डिटेक्टेड बाय, किसने डिटेक्ट किया, ये डिटेक्ट बाय जो है ना, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी कंपनी में अप्राइजल, आपकी कंपनी में भले ही वो बंदा कुछ भी सॉल्व नहीं करे, आपकी कंपनी में ऐसे लोग होने चाहिए जो आपकी गलतियां ही निकाल सके। हर एक डिपार्टमेंट में होना चाहिए, और होते भी है। बट जनरली क्या है, हम उसको ही गाली देते हैं कि अरे ये तो साला हर बार प्रॉब्लम ही ढूंढता है, अरे ये तो हर बार हमें कुछ ना कुछ गलती पकड़ के लाता है। बट एक्चुअली दे आर गुड इन सम सेंस इफ इट इज पॉजिटिवली डन, राइट? कि दे आर आइडेंटिफाइंग योर लूप होल्स, योर मिस्टेक्स, योर एरिया विच अल्टीमेटली लीड्स टू द रिजेक्शंस और कस्टमर कंप्लेंट्स एंड सो एंड सो फोर्थ। तो अगर इंटरनली होता है तो वो और बेटर है, रादर देन कस्टमर आके कान पकड़े के अरे ये तो गलत हो रहा है, राइट? सो इट्स ऑलवेज गुड, यू शुड also promote and always appreciate those kind of people. Then shift workstation area, process, molding, core, melting, जो भी है, ये this should be identified. Then कौन से पार्ट में डिटेक्ट हुआ है, ग्रेड कौन सा है, हीट नंबर कौन सा है, बैच कौन सा था, जो हर बार शरद जी भी हमें इतने दिन से वापस कर रहे हैं, ये सब कुछ घूम मिला के वापस हीट नंबर पे आया। कैसे बना था, क्यों बना था, किस दिन बना था, कौन सी बैच में बना था, कौन कस्टमर का है, कौन से पीओ नंबर के अगेंस्ट है, डिफेक्ट क्या निकला है, इसकी कैटेगरी क्या है, उसका लोकेशन क्या है, सीवियरिटी क्या है, मेथड्स क्या है, कौन सी मेथड में डिटेक्ट हुआ है, विजुअल में हुआ है, एनडीटी में हुआ है, फाइनल इंस्पेक्शन स्टेज पे हुआ है, अर्ली डिटेक्ट होता है, बाद में डिटेक्ट होता है। एवरी स्टेज कॉस्ट आर लिंक, जैसे आप आगे जाते जाते हैं मोर कॉस्ट एडअप होते जाता है। देन क्वांटिफिकेशन कि कितनी क्वांटिटी में आइडेंटिफाई हुआ है, रिजेक्शन रेट क्या आ रहा है, अगर रिवर के तो कितनी क्वांटिटी में रिवर का आ रहा है, एस्टिमेटेड लॉस क्या है। ये पार्ट भी बहुत मिसिंग होता है। हमारे उधर कास्टिंग रिजेक्ट हो गया तो भट्टी में डाल देना, बस इतने स्टेप लिखा है, राइट? वो एस्टिमेशन लॉस ये नहीं है कि उसके पीछे क्या, वो वेजी केजी में अपन ने वेट तो कर दिया कि इतना केजी का पार्ट है तो इतना केजी मटेरियल रेट है, ये हो गया। बट आपकी इलेक्ट्रिसिटी गई है, आपका ग्राइंडिंग वाला पर्सन ने ग्राइंडिंग टूल्स घिसा है, उसने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया है, मेरे दो बंदे का 4-4 घंटे का टाइम गया है उसके पीछे। वो आप एस्टिमेशन लॉस में कंसिडर कर रहे हैं क्या, कि सिर्फ पर केजी मल्टीप्लाई कर दिया और हो जाता है? सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आपको जो लॉस एस्टिमेट आप देख रहे हैं वो रोजी पिक्चर है, रियलिटी है, या क्लोज टू कितने रियलिटी है, राइट? क्योंकि बहुत बार हम ज्यादा ऑर्डर, ज्यादा कस्टमर करने जाते हैं, होता यह है कि हम 2000 का काम लाते हैं और 500 रुपए का लॉस कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि आप 1700 का काम करो, 1700 का काम अच्छे से करो, तो यू वुड अर्न मोर विथ लेस टाइम, लेस ऑर्डर, बट क्वालिटी वर्क। ये चीज भी एक इंडिया कॉन्सेप्ट में, मेनली स्मॉल और मिड स्केल फाउंड्री में कंटेंट समझना जरूरी है। शायद मनीष भाई का भी एक्सपीरियंस है, वो समझा सकते हैं इसमें ज्यादा, कि ज्यादा ऑर्डर मिलना, ज्यादा टनेज प्रोडक्शन करना, उसका मतलब आप ज्यादा अर्न नहीं कर रहे हैं हर बार। सो दैट परसेप्शन इज ऑल्सो नॉट ट्रू ऑलवेज, क्योंकि इसके सामने आप विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट रिजेक्शन परसेंटेज आपकी फाउंड्री चल रही है, वो मैटर करता है। तो ऑलवेज हायर वॉल्यूम और हायर रिजेक्शन पे काम करोगे तो और लॉस में फाउंड्री चलेगी, रादर देन लेस वॉल्यूम और हायर लेस वॉल्यूम और लेस रिजेक्शन पे करोगे तो आपकी अर्निंग ज्यादा हो सकती है। सो जस्ट कीप इन माइंड दिस स्मॉल वर्डिंग्स। रूट कॉज क्या है, इनिशियल कॉज बिकॉज ऑफ विच ऑपरेटर ने गलती किया, मटेरियल गलत आया था, मशीन पे प्रोसेस का प्रॉब्लम है, मेथड्स गलत यूज किया। बहुत सारी जगह हम मेथड को नहीं देखते हैं, बट फिर भी ऐसा होता है कि जब हम एसओपी बनाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो उसमें सब कुछ परफेक्ट है, बट वो जो परफेक्ट आपने किया है कि इस पार्ट को ऐसे बनाएंगे, हर कोई कंपनी इनिशियल सैंपल देती है। इनिशियल सैंपल अगर ओके आता है तो बाद में कास्टिंग रिजेक्शन आने का रीजन क्या है? अगर एक चीज आप सही कर चुके हो, वो चीज आपने सही करके कस्टमर से अप्रूवल लिया है, आपने इंटरनली अप्रूवल लिया है, ऑर्डर मिला है, तो वही चीज वापस रिपीट क्यों नहीं हो सकती है? तो उसका रीजन ये है कि जिस प्रोसेस से वो आपने ट्रायल लिया था, सैंपल लिया था,
वो डेटा आपने कभी उस ऑपरेटर को वापस बताया नहीं, वो सिर्फ कागज में ही रहा है कि इसमें ऐसे ऐसे करना है। जब वो एक्चुअली बनाता है तो कोई उसको सामने आके नहीं दिखाता है कि इस पार्ट के लिए हमने ये चेक पॉइंट है, ये चेक पॉइंट है, ये चेक करना, ये चीज में गलती होती है, ये चीज में ये प्रॉब्लम आया था, ये चीज में ये, तो ये चीज देख। ऐसा इंफॉर्मेशन हम कभी अपने मोल्डर को देते हैं? नहीं देते हैं। ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन अपन मेल्टर को देते हैं? नहीं देते हैं। पोरिंग वाले को देते हैं? नहीं देते हैं। तो हम किस चीज से एक्सपेक्ट करें कि तू वो गलती वापस रिपीट मत कर देना। फिर रिजेक्ट करने पे तो हम बुला के उसको चिल्ला देते हैं, कह रहे तूने तो 6 महीने पहले भी ये किया था, 2 महीने पहले भी ये किया था। बट आपने उसको उस दिन पार्ट बना रहा है तब उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है क्या कि इस तरह से पार्ट बनाना है, बेस्ड ऑन योर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, कि क्या गलती वापस नहीं करना है। राइट? सिंपल क्या है, जितने भी पार्ट्स है, जितने भी है, उसका एक पीपीटी बना लो, वहां पे फाइल रखो और मेक श्योर कि वो फाइल कोई पढ़ रहा है। कस्टमर विजिट के लिए है तब उसको दिखाने के लिए नहीं कि हमारी एसओपी टेबल पे है, यहाँ चिपका है, नोटिस बोर्ड पे मस्त लिखा है। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप और हम बहुत सारी बार यही मिस्टेक करते हैं कि हम किसी को दिखाने के लिए बोल रहे हैं कि हमारे पास है। प्रॉब्लम ये है कि आप उसका यूज नहीं करोगे तो वो होने का कोई मतलब नहीं है। सो ये लेक्चर जैसा लगता है, बट प्रैक्टिकली बहुत सारे एस्पेक्ट्स और बाउंड्रीज में जो इश्यूज है वो इसी पॉइंट्स है। ओके, टूल यूज लाइक 5 Whys, फिशबोन, परेटो, बहुत सारे मेथड्स इसमें भी यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द कंफर्म रूट कॉजेस, related process parameter, pouring temperature or mold hardness and properties, many possibilities. Then what will be the kappa, what we call as the corrective and preventive action. So corrective action क्या लिया, preventive क्या लिया। अब ये preventive वापस उसके पास जाता है क्या? जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम नहीं करने के लिए, क्या वो प्रिवेंटिव लिख दिया, बट वो ऑपरेटर के पास गया क्या? वो प्रिवेंटिव करना तो उसको है ना। ये सारे लोग जो फाउंड्री में पढ़ते हैं ना, उसमें से कोई भी उसको हाथ नहीं लगाता है। और जो ये करता है, जिसको ये हाथ लगा के बनाना है ना, उसके पास ये प्रिवेंटिव में क्या भरा है वो है नहीं पढ़ने के लिए। ये मेजर लूप होल्स ये छोटी छोटी चीजों में। ऐसा नहीं है कि नहीं आता है किसी को या कोई फाउंड्री नहीं कर सकती है, बट ये लूप होल्स छोटी छोटी चीजों में। रिस्पॉन्सिबल पर्सन और टीम कौन है जो ये करेक्टिवनेस लेगी, इंप्लीमेंटेशन कब से होगा, इफेक्टिवनेस आएगी कि नहीं आएगी, कब से इफेक्टिवनेस डेट आएगी या कौन से टाइम से शुरू करेंगे, तो उसका क्लोजर डेट क्या है, क्लोज हुआ कि नहीं, इफेक्टिवनेस आई कि नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स उसके डॉक्यूमेंटेशन के यू रिलेटेड टू द काइजन कैसे होता है। सो नाउ वी विल सी जस्ट एग्जांपल कि काइजन में प्रैक्टिकली एक एक्सेल फॉर्मेट में आपको वो भी शेयर कर दूंगा। तो दिस इज अबाउट योर काइजन। आप एक्सेल में करो, पेपर पे करो, कहीं पे भी कर सकते हैं, राइट? तो अगेन जस्ट लाइक काइजन, यहाँ पे आपके पास आईडी होना चाहिए जो कि इंक्रीमेंटल या होना चाहिए, ताकि पता चले कि एक महीने में कितनी एनसी रेज हुई, उसका बाइफरगेट कर पाए कि कस्टमर से कितनी आई, इंटरनल कितनी आई अपने पास। देन वी हैव अ डेट, कौन सी डेट को आया, कौन सी शिफ्ट में आया, कौन से वर्क स्टेशन एरिया के या डिपार्टमेंट के लिए है, कौन से पार्ट में डिटेक्ट हुआ है, उसका मटेरियल ग्रेड क्या है, कौन सी हीट में डिटेक्ट हुआ है, कौन सी टाइप का डिफेक्ट डिटेक्ट हुआ है, डिफेक्ट कैटेगरी जो मैं बोल रहा था, कहाँ कौन से स्टेज पे डिफेक्ट डिटेक्ट हुआ है, लोकेशन क्या है। ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दिखाता है कि राइजर के पास है। अपन काफी बार देखते हैं कि श्रिंकेज गेट के पास आते हैं, राइट? वो इनगेट के पास ही क्यों आया, राइजर के पास ही क्यों आया है। तो इसका भी मेथडिंग टीम, डिपार्टमेंट, टूल टीम, पैटर्न डिपार्टमेंट, सबको इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। एक टीम अगर इसके ऊपर काम नहीं करेगी, सिर्फ ये बहुत सारे दिन से क्लोज नहीं हो रहा है, एनसी क्लोज कर रहा है इसलिए कर दिया, अगर वो नहीं करेंगे, टीम से करेंगे, तो काम में भी मजा आएगा और आपका काम सक्सेसफुल भी होगा। देन सीवियरिटी क्या है, डिटेक्शन मेथड क्या है, कितनी क्वांटिटी अफेक्ट हुई है, रिजेक्शन रेट क्या है, एस्टिमेटेड लॉस क्या है, इनिशियल कॉज क्या है मेथड्स में या क्या है, उसके बाद क्या टूल यूज किया, 5 वाई या फिशबोन किया, वट एवर, कंफर्म रूट कॉज क्या मिला, उसके बाद उसका करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, देन रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इम्प्लीमेंटेशन डेट, इफेक्टिवनेस आया कि नहीं, स्टेटस, कितने एनसी ओपन क्लोज। सो दिस इज फॉर्मेट। नाउ इफ वी डू दिस, व्हाट यू कुड गो इज, जैसा आप यहाँ पे डेट वाइज फिल्टर कर सकते हैं या पार्ट वाइज मुझे देखना है, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की देखना है एनसी, देन एनसी ओपन कितनी है सिर्फ वो देखनी है, नॉट इफेक्टिव कितनी निकली, क्लोज कितनी, so we can do filtering. So total 401 एनसी जनरेटेड, उसमें से 27 क्रिटिकल है, 374 जेनरिक है। नाउ उसमें से कितने का वाई वाई सबमिट हुआ है, उसमें से कितने मैन रिलेटेड है, कितने पैटर्न और कोर बॉक्स और मोल्ड बॉक्स रिलेटेड है, कितने मेथड प्रोसेस रिलेटेड है, कितने एनवायरमेंट रिलेटेड है, कितने मेजरमेंट मटेरियल और इक्विपमेंट रिलेटेड है। सो ये लेवल तक जाना अपने आप में एक
अचीवमेंट है, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट अगर आप यहाँ तक जा सकते हैं। बट अगेन रिपीटिंग, जाने के लिए नहीं, अगर ये सारी चीजें फॉलो करके कर रहे हैं तो देन एनसी कितना है, नॉन कन्फॉर्मेंस 147 जो था, जो जनरेट किया था उसमें 147 जो है वो अभी ओपन है, 183 क्लोज हो गया है। उसमें से 7 क्रिटिकल क्लोज है, 140 जेनरिक क्लोज है। वाई वाई 2 का अभी जो है वो नॉट इफेक्टिव आया है। देन क्लोज कितने हुए, 16 क्रिटिकल क्लोज हो चुके हैं, 167 जेनरिक क्लोज हो चुके हैं, वाई वाई उसके हैं। उसका बाइफर्केशन ये है कि मेथड्स में कितने हैं, मटेरियल मैन, सो यू कैन सी मोस्टली इट्स मेथड एंड प्रोसेस। अगेन दिस ब्रॉडली गिव्स एन इंडिकेशन की जो काम अपने को करना है वो अपनी टीम के साथ इसलिए करना है क्योंकि ये काम अगेन प्रोसेस मेथड ये सब इंसान ज्यादा करता है, ये कोई रोबोट नहीं कर रहा है। राइट, आप देख सकते हैं इक्विपमेंट है उसमें बहुत कम है। मशीन इक्विपमेंट व्हाट इज रेट, 1.2%, 63% मैन, क्यों, अगेन वापस ह्यूमन आया। राइट, सो ये चीज भी इंडिकेट करेगा आपके उधर, जो आप वेलिडेट कर सकते हैं कि ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपकी फाउंड्री में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। राइट, then you can see month wise open close कितना है, you can see we have drastically changed from 23 सितंबर में एनसी थी, वहां से बढ़ते बढ़ते 66 मार्च में हो गई। इट मींस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है इन बिटवीन। अगर यहाँ भी आप देखो सितंबर अगस्त के बीच में आप देखो, सो दैट ऑल्सो शोज कि ये इम्प्रोवाइजेशन कब हुआ और कब हम डिटरेट हो गए। राइट, सो अगेन यू हैव टू शो द डेटा, कौन से पार्ट में किन सी एनसी जनरेट हुई है, कौन से डिपार्टमेंट और कौन से डिफेक्ट वाइज कितनी हुई है। सबसे ज्यादा हमारी जो है वो सैन इंक्लूजन में है, 80 सैन इंक्लूजन है। वी हैव अबाउट वॉल्यूमेट्रिक डिफेक्ट 48% है। उसमें भी लाइक टॉप मोल्ड में कितनी है, बॉटम मोल्ड में कितनी है, कितनी एनसी मोल्डिंग डिपार्टमेंट में, यू कैन सी इट ऑल्सो शोज मोल्डिंग के अंदर सबसे ज्यादा एनसी है, 115। राइट, देन वी हैव मेल्टिंग। सो अगेन आप ब्रॉडली देखने जाओ तो ये इनिशियली जो भी पोरिंग से पहले होता है मोस्टली एनसी वही होनी है, क्योंकि उसके बाद तो बहुत लिमिटेड चांसेस है, ह्यूमन एरर्स वगैरह अलग निकाल दे तो। बट प्रोसेस आप देखो तो कहाँ है, सब कुछ मेल्टिंग से पहले ही है, पोरिंग से पहले ही है। तो ये एरिया आपके क्रिटिकल्स है। अगेन आप देखो फाउंड्री कंपेयर टू प्री मशीनिंग और मशीनिंग, ऑफ कोर्स फाउंड्री में ज्यादा होना है। जनरलिक एंड क्रिटिकल, डिफेक्ट वाइज विजुअल में कितना है, यूटी में कितना है, माइक्रो में कितना है, केमिकल केमिस्ट्री डेविएशन कितना है। सो अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं विजुअल जो पर्सन ढूंढ रहा है, जिसको मिला है वो भी बहुत सारे केस में ह्यूमन, अगेन हु हैज फाइंड व्हाई ये रिजेक्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ। then department wise we have seen this way. So basically what I want to show you is कि ये सब चीज मुमकिन है, बट यहाँ जंप नहीं करना है। अगर ये एक्सेल पे आप लिखा पोती कर रहे हैं तो डिजिटलाइज मत करना, इसको ही कुछ जुगाड़ करके बनाने का आइडिया ढूंढ लेना है। अगर ये सही में एक्सेल पे हो रहा है तो इसको डिजिटलाइज करने का सेंस बनता है। So this is what I just wanted to add into the non-conformance part as well. I will also invite Manish Bhai to give this input on this. Yes. So I'll share something which we are doing, मतलब आप जो बोल रहे हो, and इसका benefit हमको भी जो हुआ था वो भी मैं दिखाता हूँ। Just to- मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes. दिख रहा है. So this is one of the digitalization which we started somewhere in 2021. अभी हम 2025 में है. And following this, for us, complaint is a non-conformity. And complaint, customer and complaint, because we are in capital goods. So every complaint, this part is from the digital Google form. And after that is where we process all of this. और जब तक वो क्लोज नहीं होता है तो यहाँ पे फिल्टर करके दिखता है कि कितना ओपन है कितना क्लोज है। सिंपल गूगल शीट है, सिंपल गूगल फॉर्म है। तो Very जैसे nice. भूषण ने कहा कि आप जो भी प्रॉब्लम है और इसमें रिव्यू इन ऑल ऑफ दिस, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज की इट इज द रिव्यू is done at the top of the ownership of the management, because quality and complaints directly top management के पास से इसका review mechanism. So this is when we look at digitization as a tool, then
the intent starts from the top कि मुझे improve करना है. Whether you talk of OEE, complaints is also part of OEE, overall equipment effectiveness. क्योंकि आप रिजेक्शन है, आपका फील्ड में रिजेक्शन हो रहा है या इन हाउस रिजेक्शन हो रहा है. सो दैट कल्चर हैज टू स्टार्ट कि मुझे इम्प्रूवमेंट करना है. इसके बिना, ये इंटेंट के बिना आपका कोई भी डिजिटाइजेशन काम नहीं होगा. एंड it is the failures or the complaints and the feedback and non-conformity which help us to improve continuously, because all these complaints become the foundation for Kaizen. Okay? So non-conformity is actually an input to Kaizen. Anything Right. where I'm not conforming, that means there's something wrong in my system. So yes, as you have rightly said, it's और ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है. यू कैन स्टार्ट योर डिजिटाइजेशन, बट अगर आप ये मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करना शुरू करते हो, देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल फाइंड इतना इंफॉर्मेशन आपके पास आना शुरू होगा कि ये प्रॉब्लम बार बार क्यों आ रहा है, ये प्रॉब्लम का फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है. एंड वन मोर थिंग विच भूषण हैज स्ट्रेस्ड कि it is important that we don't do this for the external world. We do this for ourselves. अगर आप खुद के लिए करेंगे तो ये सस्टेनेबल है, बाहर के लिए करेंगे तो वो सस्टेनेबल नहीं है. अभी इसके जो चैलेंजेस बहुत सारे हैं वो शायद हम कल डिस्कशन करेंगे कि ये इम्प्लीमेंट करने का बोलना बहुत आसान है, और हम लोग 2021 से अभी तक क्या कर रहे हैं. So it has gone through a lot of learnings, and we can share how, because if I am going to sit on the top of the table and every day ask kahan complain hai, then also it is not sustainable. So how this can become a system, how digitization can become a very strong tool for building systems and building capacity within the organization. This is something which I think we can discuss today. Right. Very good. But from a visualization perspective, what you have shown is something which is very good to when you want to demonstrate and have real time. Because what happens is कि हम लोग जब ये बनाते हैं, फिर किसी को अच्छा वहां जाके ग्राफ लगा के आओ, ग्राफ देखने कौन जाएगा. बट डिजिटाइजेशन उस चीज को एक दूसरे लेवल पे ले जाता है कि आप इसमें वेबसाइट पे भी ले जा सकते हो, आपके इंटरनल सिस्टम में ले जा सकते हो, अपने मोबाइल में ले जा सकते हो. So digitization can really lift the work you are doing. अगर आप कुछ कर रहे हो मैनुअली, उसको डिजिटाइज कर दीजिए. आपका इंफॉर्मेशन एनसी का हो या काइजन का हो, वो डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द पीपल इनसाइड आउटसाइड जो भी उससे कनेक्टेड, it really helps in building your own capacity. Very true. So anybody has examples? आप लोग इस तरह का कोई डिजिटाइजेशन करते हैं, why, or if you are not doing, why, and if you are doing, then if any experiences you have which you can share with others. राइट. बेसिकली आपका एक्सपीरियंस बोथ काइजन और नॉन कन्फॉर्मेंस के लिए क्या रहा है अभी तक का आपकी फाउंड्री के अंदर, आप उसको कैसे मैनेज करते हैं और उसमें आपको क्या चैलेंजेस या एडवांटेज अभी तक मिले हैं, यू कैन शेयर दोस एज वेल. Anyone would like to share on this? Okay. So I think there is no further input on this from the participants. So we will share this recording. Maybe you can refer it with your team later on. And tomorrow will be the last session. And we look forward to your participations, as well as the management of the foundries are also requested to join tomorrow's session.
So they will also get, I think, insights. We will also summarize what we have done in last, 1 week, 10 days, and we hope that will be useful to everyone. Yeah. Okay, Thank so you. thank you everyone, and thank you Manish Bhai for joining. Looking forward to the session tomorrow. Thank you. Bye. Thank you. Thank you.